One thing you must have noticed that non-verbal communication are basically louder than words. We don't always use words to communicate. We sometimes act in order to communicate. For example, rather than saying bye, I'll just say this. Rather than saying I'm okay, I'll just say this. So these are basically non-verbal communication. A very good evening, everyone. My name is Rahul Negi, and you are watching me on the Scholar's Guide. So this basically is day 61 of 150 days, 150 topics. And the topic for today is non-verbal communication part 2. पार्ट वन में हमने अराउंड 5 टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करे। इसमें हम अगले 5 करेंगे, ठीक है। So type number 6 is physical appearance. Physical appearance, what is physical appearance? Appearance itself communicate message. For example, clothing कैसी है, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आप ग्रूमिंग कैसे है, पर्सनैलिटी प्रेजेंटेशन कैसे है, ठीक है। These things matter. Although there will be people who say that don't judge a book by its cover, but believe me, every time a book is judged by its cover. So you will be judged by your appearance, because that is the first thing that you are showing, that whether you are attentive or not, whether you are very serious about this or not. Okay, no one is going to look into your heart at the first. There will be appearance, right? Okay, example क्या है, formal dress in an interview communicates professionalism. Type number two is artifact. Artifact are the object used to communicate meaning. For example, jewelry, gadget, car, office decoration, religious symbols. So these do communicate more about yourself. For example, a professor's bookshelf communicates expertise. मतलब एक professor will be expecting from a professor that he'll be have a nice library, he'll be have good bunch of books. And someone who is car enthusiast, हम उससे एक्सपेक्ट करेंगे उसके पास अच्छी कलेक्शन ऑफ कार्स या बाइक्स होंगे, व्हाटसोएवर इट इज। फॉर एग्जांपल धोनी, उनके पास कितना अच्छा बाइक्स का कलेक्शन, बिकॉज ही इज अ बाइक enthusiast. दैट्स his artifact tell more about himself. इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन, फिजिकल सराउंडिंग इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन। आपके फिजिकली क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आपकी चीज़ कम्युनिकेट, वो भी आपके कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि लाइटिंग कैसी है, फर्नीचर कैसा है, कलर क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, क्लीनलीनेस है कि नहीं है, ठीक है। इफ़ थिंग्स आर क्लीन, वी वांट टू डेफिनेटली, हम शहरों से पहाड़ों की तरफ आते हैं क्योंकि हमें ग्रीनरी चाहिए, हम क्लीनलीनेस चाहिए। एंड अगर आप पर हम क्या करते हैं, शहरों से पहाड़ों की तरफ आते हैं क्योंकि हमें प्योर इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, हम ग्रीनरी चाहिए, पर हम वहाँ भी गंदा करते हैं। सो दैट टेल्स अ लॉट अबाउट आवरसेल्फ। सो इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, सर्कुलर सीटिंग अरेंज इंकरेजेस डिस्कशन। मतलब अगर आप एक जीडी में बैठे हो तो आपको ऐसे फेस टू फेस बताया जाता है, बिकॉज इफ आई एम रेजिंग एन आर्गुमेंट, द अदर पर्सन विल सी मी with my expression and they will be able to encounter, ठीक है। सो दैट environment के बारे में, ठीक है। टाइप नंबर 9 इज ऑल ऑलफैक्टिक्स। ऑलफैक्टिक्स मतलब स्मेल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन थ्रू स्मेल। अब स्मेल से आप कहोगे कैसे? You must have noticed some people well groomed, and when they you know pass by, a pleasant smell comes, तो आपका कितना अच्छा इंप्रेशन बन जाता है उनके बारे में। so that also uh, टेल्स अ लॉट। जैसे परफ्यूम हो गया, बॉडी ऑर्डर हो गया, इंसेंस हो गया। स्मेल क्रिएट्स इम्प्रेशन एंड इमोशनल रिएक्शन, ठीक है। यू फील a sense of attraction toward that person, so that is what emotional reaction. So that also communicates something. साइलेंस, साइलेंस itself communicates meaning। मतलब साइलेंस एक ऐसी चीज है which communicates more than words. Can indicate respect. For example, if there are people, I'm surrounded by people who are above me. For example, I'm a scholars, there are professors, there are HOD. So I'll try to keep quiet in those situations. I like to learn from them, not to speak much. So that is respect. Anger, anger also. If I'm angry from someone and they keep asking me and I'm not respond, so that is also anger.
reflection, rejection, sadness, all these can be deposited by silence. Example, silence after criticism may show disagreement. ठीक। अच्छा, ये चीज़ आपको थोड़ा मैंने शॉर्ट में बता दी है, तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। जैसे काइनेक्स क्या होता है, बॉडी मूवमेंट होती है। प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है, स्पेस एंड डिस्टेंस, जो हमने बताया था ना, क्लोज होता है, फिर 1.5 से 4 फीट होता है, 4 से 12 फीट होता है, 12 एंड अबव फीट होता है। ठीक। हैप्टिक्स मतलब टच, आपके शोल्डर पे पैट करना, आपको हैंड शेक करना, सो दैट इंक्लूड्स टच। क्रोनोमिक्स मतलब होता है टाइम। पैरा लैंग्वेज, टोन एंड वॉइस। ठीक है। ऑक्यूलिक्स, आई कांटेक्ट, ऑक्यूलिक्स भी ध्यान रखना। ऑक्यूलिक्स मतलब क्या होता है, आई कांटेक्ट। ऑल्फैक्टिक्स, स्मेल, और आर्टिफैक्ट्स हमारे ऑब्जेक्ट एंड अपीयरेंस। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट ये चीज़ें मैंने कई बार देखी हैं यूजीसी नेट पेपर में। ओके, नाउ द लास्ट वन इज फंक्शंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फंक्शंस क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के? Non-verbal communication can repeat repeat verbal message. It reinforces the verbal message, मतलब repeat करना. For example, um, you are saying yes and you are nodding. It means these two are with their combination, it is enhancing the message. Saying yes while nodding. Contradict, oppose verbal message, conflict with verbal message. वर्बल मैसेज को ही अपोज करता है ये, मतलब दिस क्रिएट्स conflicting effect with what you are saying and what your expression is. Saying I am happy while crying, although that could be happy tears, but it's confusing, right? You are happy at the same time you are crying. सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, रिप्लेसेस वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। एग्जाम्पल, वेविंग इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड बाय। आई विल नॉट से गुड बाय, जस्ट वेव। सो दिस इज सब्स्टिट्यूट। आई हैव सब्स्टिट्यूट द वर्ड बाय विद जस्ट हैंड एक्सप्रेशन। कॉम्प्लीमेंट क्या है, एड मीनिंग विच इन टर्न एनहेंसेस वर्बल मैसेज। ऐसा मीनिंग ऐड करना कि वो वर्बल मैसेज को एनहेंस करता है। जैसे टीचर यूजिंग जेस्टर्स व्हाइल टीचिंग, लाइक मतलब शो करके या दिखा के, ऐसे मतलब हैंड एक्सप्रेशन या किसी भी एक्सप्रेशन से वो चीज़ क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट करती है मेन मीनिंग को, वर्बल मैसेज को। रेगुलेट, कंट्रोल द फ्लो ऑफ कॉन्वर्जेशन। एग्जाम्पल, आई कॉन्टेक्ट सिग्नल हुज टर्न इट इज टू स्पीक। मतलब अब फॉर एग्जाम्पल, इफ it is not important to speak, I'll just say that this person needs to speak, so I'll just you know do some eye contacts or do some eye signals. So eye contact signal whose turn is to speak. Control the flow of conversation. ठीक है? So that's it for today. I hope you liked it. If you did, subscribe to the Scholars Guide, because that is the sole motivation that I have, and that is the reason why I have created so far 61 day and 61 videos. And if you are interested in research or PhD में interested हो, तो सैटरडे को 7:15 पे मेरी वीडियो आती है। इफ़ यू आर interested in Mahabharata and Mahagatha and all about our past or our history, ancestral history, then you can at this time I upload video on every Sunday. Okay, so and also comment down your valuable suggestion, and I'll see you in the next video.